productivity of 80 to 5% matlab means full concentration of a particular subject. But now in recent time it gradually decreases. Sometimes See I what? feel bored in Yes. studying. So that is the reason. Now you Yes. tell me the reason. There is some sort of a boredom that is set in, and that is reducing the productivity. Now let me suggest to you and all others who are listening to me just now, how do you reduce boredom? You know, when you are stuck in a room and reading the books all over and over again, the monotony sets in and then you start feeling bored. How do you break that monotony? There are a few ways in which I can suggest some of to you. CP, you get into a WhatsApp group of friends who are appearing in the civil service. Fix a time in the evening for about an hour where you discuss a particular subject. This will break the monotony of the books that you read and will help you learn also and move ahead. So you have to somehow attempt to break the monotony. That is one. Number two, I don't know, how do you relax yourself? Do you like music? You like walking? You like listening to somebody else? You must find a way to relax your mind. If you don't relax your mind and remain in the monotony of studying, then the productivity will certainly be affected. So one is set up a WhatsApp group, have a discussion with your friends on the WhatsApp and nothing else. No hello, goodbye and happy birthday. Only focused on that particular subject that you decide for a particular day. Prepare for that and discuss that in a group. It will break the monotony, help you improve your knowledge and communication skills. Secondly, as I said, you must find a way to relax. Listen to some music, indulge in yoga, discuss with somebody who you like, spend some time with your parents. Break the monotony. If the monotony is broken, then the productivity will improve. Thank you, sir. Okay, next, Akash. Akash is there? Akash, unmute yourself and ask your question and put your video on also. Hello, sir. Hello, Akash. Sir, am I audible? You are audible. Sir, my question is that I have joined, sir, StudyIQ of third batch in last August, and now the history syllabus has completed 1 month, sir, and I am a working student. Sir, how I manage, sir, Akash, I manage the have time, been... and Okay. I see, sir, ki only 9 months is left for my prelims and mains. Then after mains, so I get very little time, sir. So I sometimes get feared about the time lag. Akash, I have advised many aspirants like you, and I have suggested that you can't continue to work somewhere and study for the civil service exam. You have to decide whether you want to compete in civil service. If you do decide that, then you have to take leave from your existing assignment and focus totally on your studies. If you work and study, then perhaps you will not find sufficient time to qualify. This is not to say that people who are working don't qualify, they do. But then my general understanding is that if you're working somewhere and you want to prepare also along with it, then the chances are that you will not have sufficient time to study and you will continue to feel low because you will not be able to prepare yourself sufficiently for the examination. So you have to give it a thought and take a call whether you want to take leave for a year, prepare for the civil service exam, give it your all in that year. And if you don't qualify, then you can join the work again, but you can't do both the things together. Sir, I am government employed, sir. Government can give you leave. I have been a government employee. You can take long leave without salary and government can give you leave. But if you want salary and you don't want to work, then there's a problem. Okay, sir. Okay. StudyIQ IAS हिंदी चैनल पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया है और आपको मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है आपके चैट बॉक्स में. आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. और वैसे सवाल जो एक आध सवाल होंगे जो मैं हर बार YouTube से लेता हूं, तो सर मैं भी इसमें आपसे पूछ लूंगा. देखते हैं कि आगे कौन लोग जुड़ रहे हैं. अनुराग पात्रा, अनुराग हैं आप? अनुराग, अगर आप सुन रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. अनुराग पात्रा. अनुराग इज नॉट देयर, राइट? रोहिणी गौंड ऑन किया था. अनुराग, अपना माइक ऑन कर लिया है आपने.
पूछिए अपना हेलो सवाल। सर। हेलो सर। अनुराग। हेलो अनुराग। जी सर, आई एम ऑडिबल सर? Yes, you are audible. Please go ahead. सर, आई हैव वन प्रॉब्लम पर्सनली। Yes. सर, मेरा बोलने का प्रॉब्लम है, तो मेरा थोड़ा डर लग रही है, उसी के लिए बोलने में थोड़ी दिक्कत है। कोई समस्या नहीं है अनुराग। आपका मीडियम हिंदी है या अंग्रेजी है? इंग्लिश है। तो आप इंग्लिश में ही वार्ता कीजिए, चाहे रुक रुक के कीजिए, लेकिन प्लीज कन्वर्स इन इंग्लिश इफ योर मीडियम इज इन इंग्लिश। ये सर। सर Go ahead, ask your question. सर मैं थोड़ा डर लग रही है इंग्लिश में, और मेरा बचपन से प्रॉब्लम है कि बोलने पर ही लग ही जाता है। देखिए अनुराग, अगर आप अपना एग्जाम अंग्रेजी में देने पे विचार कर रहे हैं और आपको अंग्रेजी बोलने में समस्या आ रही है, तो फिर आप अपना एग्जाम कैसे देंगे? इस पे आप विचार कीजिए। इसको आप इतनी मेहनत सर- करेंगे, उसके बाद अपनी बात को कह नहीं पाएंगे। आपको अंग्रेजी में कहना है उसको एग्जाम में, तो जब आप बात बोल ही नहीं पा रहे हैं तो आप लिखेंगे कैसे और करेंगे कैसे? इस पे विचार कीजिए आप। जी सर। और इसका एक सर, मेरा- तरीका है अनुराग, अगर आपने मेरा वो वीडियो ना देखा हो जो स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर है, उस यूट्यूब चैनल को देखिए, इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड एट लेंथ हाउ कैन यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। I don't know whether you have seen that video, Anurag? जी सर। You have seen that video? यस सर। Have you started practicing the way I have suggested in that video? यस सर। Which article did you read today? सर, हिंदू का एडिटोरियल। You read it today aloud? यस सर। Wonderful. So keep practicing that for next few months, and your communication skills are likely to improve if you do that regularly and follow the drill that I have suggested in my YouTube. Once you do that, your Yes. communication skills will improve and you will gain in confidence. Right now, you lack confidence because you yourself say that you find it difficult to speak. So my suggestion to you is read that article aloud regularly, then speak it out in your own words. If you do that, your communication skills will improve and give you enormous confidence. Okay, Anurag? Yes, sir. Sir, what my problem is on childhood. So see, if it is a natural problem, don't worry about it. Each one of us has some problem or the other. There is no perfect individual. So don't worry about it. Keep practicing and you'll improve. Okay? Yes, sir. ठीक है अनुराग, मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मिल गया है। बहुत सारे लोग चाहें तो अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। सिमरन का क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट, जिन्होंने अपना क्वेश्चन लिखा है इसमें। सिमरन, आवाज आ रही है आपको? Simran, you unmute yourself and ask your question. आप पढ़ दीजिए उनका प्रश्न अगर वो नहीं। सिमरन ने पूछा है, I get easily distracted with my surroundings. For example, if someone is fighting or talking something bad about me, तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और उससे इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। सिमरन, ये लोग तो आपके बारे में चर्चा करते रहेंगे। अगर आप सिविल सेवा में आ जाएंगी तब भी चर्चा करेंगे आपके बारे में। तो कब तक आप सुनती रहिएगा उन लोगों को? जिन लोगों को चर्चा करनी है उनको चर्चा में रहना दीजिए, आपको आगे का रास्ता देखना है ना। You have to find a way for yourself. You know, I am not very fond of Winston Churchill, but he made some very important remarks. He said, if you keep throwing stones at every dog that barks at you, you will never reach your destination. Meaning thereby, आप अपने काम पे फोकस रहिए और इस विचार से काम कीजिए कि आपका एक लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए आप अपना कार्य कर रही हैं। तो अगर कोई इधर उधर की बात करता है, उस पर आप उसको कट ऑफ कर दीजिए। अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो आजकल तो बहुत बढ़िया ईयर प्लग्स आते हैं, अपने कान में लगा लीजिए दोनों ईयर प्लग्स, आपको आवाज भी नहीं सुनाई देगी। पहले हमारे टाइम पे ईयर प्लग्स नहीं मिलते थे, हम रुई लगाते थे। आप ईयर प्लग्स लगा लीजिए तो बिल्कुल एकदम सेफ हो जाएंगी आप। क्यों सुनती हैं आप उनकी बात? उनको जो करना है उनको करने दीजिए, आपको करना है आप करने दीजिए। आप उनसे क्यों प्रभावित हो रही हैं? और अगर आवाज आ रही है तो ईयर प्लग्स लगा लीजिए या कोई अच्छा म्यूजिक सुनिए अपने कान में लगा के और पढ़िए अपने उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षित माहेश्वरी। हर्षित, अगर आवाज आ रही हो तो हाँ, अनम्यूट कर लिया है आपने, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन करके आ जाइए, सवाल पूछिए। Sorry sir, I can't actually. कोई बात नहीं, सवाल पूछिए। Sir, very good morning. Sir, my question is I can't remember during writing answers.
Sorry? I forget everything. Whenever I try to write my answers, I forget everything. Matlab, it seems like vanishing everything from my mind. Okay, Harshit, when is your exam? When are you appearing? I want to appear in 2024. And you already started writing answers? Yes, sir. Which means that you already studied everything. Sir, I am writing answers topic-wise or chapter-wise. No. How can you write answers when you don't know how to write? First, you have to learn how to write. Then start writing answers. Without that, Yes, you will sir. never be able to write answers. You are assuming 2 years before the final exam that you want to practice writing answers. First, acquire sufficient knowledge, acquire the tools to write, and then write answers. Sir, actually, problem is I am studying and revising NCERT notebooks twice, thrice, a chapter twice, thrice, and whenever I try to write such a topic, I forget everything, whatever I studied before So hours. you have to channelize and write immediately after you read. Don't write an answer. Write what you have read. Don't write an answer. You are getting into answer writing Okay, right sir. now. Suppose you have read a chapter. Forget the questions. You write what you've read in the chapter, not in an answer Yes, form. sir. Just try to recall what you've written. You know, bear with me, and I've seen many people improve that instead of writing an answer, write what you read. So, for example, you are talking to me just now. After this session gets over, write what you spoke to me and what I told you. Your memory will start developing that way. You start focusing on writing an answer, that's a problem. First, you should know and remember what you've read. Then you have to structure what you've read in the form of an answer, which is different. Writing an answer is different from rewriting what you've read. And that is why, if you have seen my video on StudyIQ regarding improvement of communication skills, I have suggested that you read the editorial article, put it down, speak it out in your own words, so it will be recollected. Then write it in your own words. Once you do that on a daily basis, you will get into the habit of absorbing what you've read. Right now, what happens is you read and forget. But if you read and speak and write, the chances are that you'll be able to recall what you've read. Okay? Yes, sir. And sir, I am having one more query. Actually, I am having some silly mistakes also. Whenever I try to write, lack of concentration or focus, I don't know. No, And having silly mistakes like spelling mistakes. So you should, that is where practice helps. And practice is not in answer writing, practice in writing. Whatever you write, you will still make those silly mistakes. You will underline those mistakes. You will remember those mistakes so that you don't repeat those mistakes. That's how improvement happens. It doesn't happen overnight. It happens over a period of time. ठीक है, अगले सवाल पर Thank you so much. प्रयास, इनका नाम ही प्रयास है तो काफी अच्छा नाम है प्रयास. Hello, sir. Hello, Prayas. Please open your video if you can. Hello, sir. Good evening, sir. Sorry, sir, I can't open my video. Okay. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. Sir, since it has been 1 month, I am starting preparation. Sir, I am facing a personal problem that, sir, I don't able to maintain self-discipline, sir. Prayas, I don't know what you mean by self-discipline. Your discipline has to come from within. You must have had reasons for not discipline. If you are focused on your objective, then discipline will come automatically. So either you are not very clear in your mind, you want to become a civil servant, appear in the civil service exam. If you focus on your objective, the discipline is the cause and the tool through which you become, you qualify in the civil service exam. So I don't know whether you plan your day. If you do plan your day, then see what is the plan for the day and what you do during that time. Second is, if you develop an interest in what you're doing, if you start liking what you're doing, then you look forward to doing that. Usually what happens is that you're studying because you want to qualify for the civil service exam. You have no interest in studying. You're not enjoying studying. If you enjoy studying, I've seen this with many aspirants,
that those that enjoy what they're doing do not find it difficult to discipline themselves. If you treat it as a discipline, then you don't want it, but you want to do it. That is where the problem is. Start liking what you're doing, start appreciating what you're doing, start developing a sense of satisfaction in what you're achieving, little what you're achieving, then you will start liking what you're doing. And once you start liking what you're doing, you'll be able to discipline yourself. Okay, thank you, sir. एक सवाल सर मैं YouTube से ले रहा हूँ, हालांकि ये बैच 3 के स्टूडेंट भी हैं हमारे, इन्होंने YouTube पर क्वेश्चन किया। सनी प्रजापति हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट हैं, डिसेबल स्टूडेंट हैं और मेंस आंसर लिखने में असमर्थ हैं, तो अपनी प्रैक्टिस फिर कैसे करेंगे? देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आप में से जो लोग 2023 या उसके बाद सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, वो आंसर का प्रैक्टिस अभी तत्काल शुरू ना करें, अभी लिखने का प्रयास करें। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि अगर आप लेखनी में आप सुधार कर लेंगे, अपना लिखने की शक्ति में आप सुधार कर लेंगे, लिखने के तरीके में सुधार कर लेंगे, तो उत्तर लिखने में आपको आसानी होगी। उसमें थोड़ा अंतर है। उत्तर के लिए आपको उस विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से आप अपनी भावनाओं को वहां प्रस्तुत कर सकें। अगर आपको विशिष्ट जानकारी ही नहीं है तो आप किसी प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? तो साथ साथ आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसके माध्यम से आप लिखना निर्बाध रूप से लिख सकें। होता क्या है, जब हम लिखते हैं तो हमारे जो विचार आते हैं दिमाग में, उसमें संकोच होता है उसकी अभिव्यक्ति में। जब आप लिखते हैं, एक बार ये समाप्त हो गया कि आपके विचार जो आ रहे हैं उसको आप निर्बाध रूप से अपनी लेखनी से लिख सकते हैं, तो फिर आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लिख लेंगे उत्तर, क्योंकि उत्तर लिखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। तो ज्ञान आप अभी प्राप्त कर रहे हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि 2023 में जो इम्तिहान दे रहे हैं उन्होंने अभी पूरी तैयारी नहीं की होगी। तो जब तक आपने पूरी तैयारी नहीं की तो उत्तर कैसे आप लिखेंगे? सर ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से ये फिजिकली चैलेंज्ड है। ओके। और ये पूछ रहे हैं कि फिर मैं आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कैसे करूं? नहीं, फिजिकली चैलेंज आपको लिखने में समस्या है? हाँ, इन्होंने कहा लिखने में ये असमर्थ हैं और फिर प्रैक्टिस को लेकर ये लिखने में असमर्थ है तो समस्या है, उसका कोई सीधा समाधान नहीं है। धीरे धीरे आप उसको किसी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कीजिए कि आपको जो लिखने में समस्या है उसको कैसे आरंभ करें। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं कि किसी हैंडीकैप्ड को बता सकूं कि अपनी लेखनी कैसे सुधारें। आपको किसी एक्सपर्ट से इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। साथ में आप नोटिफिकेशन भी देखिएगा, आपको एग्जाम में ये सुविधा मिलती है कि अगर आप खुद नहीं लिख पा रहे हैं दूसरा तो लिख सकता है। तो उसके लिए आप अभी से एक फिक्स किसी फ्रेंड को, या उसमें मेरे ख्याल से मैट्रिक होता है एलिजिबिलिटी, मैट्रिक अबव किसी भी को लेकर आप लिख सकते हैं एग्जाम में। आप नरेट करें, वो लिखें, ऐसा है। आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्मिता दास। स्मिता, आवाज आ रही हो तो अनम्यूट कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए, सवाल पूछिए सर से। हेलो। हाँ स्मिता, अपना वीडियो ऑन कीजिए आप। सर नेटवर्क इशू, कैन आई स्पीक इन ऑडियो ओनली? ओके, sure. Go ahead, ask your question. Good morning, sir. Good morning, Smita. Sir, I started my civil service preparation from this August, and some easy subject with which I am acquainted before, like history, geography. I can write something which I have studied. But yesterday I tried to write current affairs question, but I cannot think anything. I cannot recall the words which I have acquainted now. Smita, Should I start? Smita, this is Yes, a sir. problem which many people face. You don't have to necessarily recall the specific words that you have read. You can express views in your own words, but there are certain factual details that you have to recall. Okay, sir. Now, for that you have to practice. Practice in the sense of trying to associate, which I was telling elsewhere, associate with what you already know. That's how you learn. The process of learning is from known to unknown, meaning thereby that you associate what you don't know or what you're trying to learn with which
you already know. And if you do that, it will be easy for you to recall what you have read, because there's so much information that you have to learn that until you find a way of associating with something which you already know, it will be very difficult to recall what you read regularly. So try this method, and many people have succeeded in improving their learning. But more importantly, you must try and understand what is written rather than learn what is written. If you understand it and you improve your language, your communication skills, you will be able to express the same thing very easily. Okay, sir, I will follow it. Sir, should I start answer writing for current affairs from now? My suggestion to everyone is right now, practice writing, not answer writing. You understand the difference? Answers you should start writing in January, February, not right now. Right now, acquire knowledge and practice writing as much as you can. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, नेक्स्ट हैं राकेश कुमार शॉ। राकेश, सवाल पूछिए अपना। वीडियो ऑन कर सकें तो वीडियो ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। राकेश कुमार शॉ is not there. राहुल RM, राहुल आ रही है आवाज तो सवाल पूछिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और वीडियो ओपन कीजिए, सवाल पूछिए। अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं कर पा रहे हैं। You can make out. ठीक है, कोई बात नहीं। सूर्यनाथ, सूर्यनाथ आवाज आ रही है आपको? Yes. हाँ, पूछिए अपना सवाल। वीडियो ऑन कर सकें तो वीडियो ऑन कीजिए। Good morning, sir. Good morning, Surinath. Sir, usually I don't have any issue. I'm doing well, but the main problem is if the classes are getting over earlier, the teacher usually leave the class early. I think the teacher should discuss the previous topic and should ask questions regarding the previous topic. That will be very fine for us, sir. That is the only सूर्य, सुझाव के लिए बहुत शुक्रिया। सर से अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, अदरवाइज ये बात आप अपने मेंटोर को सजेशन में जरूर दीजिए, मैं भी नोट कर लेता हूँ इसको, है ना? नहीं सर, थैंक यू सर, आई एम एंजॉयिंग द क्लास वेरी वेरी मच एंड आई एम डूइंग वेल सर, थैंक यू। म्यूट कर दीजिए अगर आवाज आ रही है उधर से तो। पूजा गुप्ता, पूजा POOJA, पूजा गुप्ता। पूजा, आपको आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए, सवाल पूछिए। पूछिए। Good morning, sir. Good morning, Pooja. Good morning, If you can open your video, please open your video. हाँ सर, मेरे साथ इश्यूज है कि मतलब सर टाइम मैनेजमेंट को लेके इश्यूज है। एक्चुअली सर मैं वर्किंग प्रोफेशन में भी हूँ और फिर मैं घर से ही रह के जॉब करती हूँ, तो इसलिए थोड़े से टाइम इश्यूज में मतलब प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पिछला वीडियो सर आपका देखा था, तो उसमें एक मतलब कई स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा था वर्किंग प्रोफेशन का, तो आपने उन्हें ये सजेस्ट किया था कि या तो आप लीव लीजिए, मतलब दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो मैं उस टाइम पर भी होपलेस हो गई थी, पर सर मैं ये भी नहीं कर सकती कि मैं लीव ले सकूं, या फिर तो सर सजेस्ट करिए कि मैं कैसे मैनेज करूं। मेरे पास कोई आपके लिए सुझाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम बड़ा टफ एग्जाम है और इसमें जो आपके साथी जो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं वो पूरे समय अपनी तैयारी कर रहे हैं। या तो कोई जीनियस हो वो बिना पढ़े जो है अपना समय लगाए आ जाए,
लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है आना। मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ, लेकिन मेरा ये फिर मानना है कि आपको इसको पुनः विचार करना पड़ेगा कि साल भर के लिए आप इसको दीजिए सिविल सेवा को। तो जो सेवा आप अगले 35 वर्ष करने जा रहे हैं, उसको अगर आप साल भर भी नहीं दिए तैयारी के लिए, तो सेवा में आप कैसे आइएगा? तो आपको विचार आपको करना है। मेरी राय तो यही है कि अगर आप सिविल सेवा में अपीयर कर रही हैं तो कम से कम 1 साल तो दें अपना सिविल सेवा। सर यूट्यूब पे मतलब और टॉपर्स के वीडियो देखे थे, तो मतलब वर्किंग प्रोफेशन वाले पेपर्स हैं सर, तो उन लोगों ने ये ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया था, तो शायद मुझे एक वो कर लूंगी। देखिए, मालूम नहीं वो टॉपर्स क्या करते हैं, मुझे पता नहीं। मैं तो सिर्फ सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि जीनियस रहे हों, उन्होंने कर लिया हो। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि मैं भी पुलिस सेवा में था, फिर IAS में आया, लेकिन वो बात अलग होती है। ये अलग से आप कहीं कार्य कर रही हैं तो आपको कम से कम 7-8 घंटा तो चाहिए पढ़ने के लिए, और आप काम कर रही हैं तो शायद आपको नहीं मिल पाएगा। नो सर, 7-8 घंटे मुझे मिल जाते हैं। एक्चुअली सर मेरा मतलब बेसिक डिपार्टमेंट में है जॉब, तो फिर वो मैं 7-8 घंटे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मतलब रिवीजन छूट जाता है अगर मैं कुछ आगे पढ़ती हूँ तो। ऐसा है कि 7-8 मैं कह रहा हूँ, तो उसके अलावा आप रेस्ट कर लें और काम कर लें। आप अगर ऑफिस से काम करके आएंगे तो 8 घंटा घट के 2 घंटा ही रह जाता है, पढ़ने को 8 घंटा है, लेकिन आपको कंसंट्रेट करके उतनी मेहनत से नहीं पढ़ पाएंगे, आपको थकान होगी वहां से करने के बाद। तो इसको समझना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। घंटा सिर्फ समय नहीं है, घंटा वो है जिसमें आप अच्छी तरह पढ़ पाए, रिलैक्स होकर पढ़ पाए। जब आप ऑफिस में 8 घंटा लगा के आएंगी तो आप कब पढ़ेंगी और कब रेस्ट करेंगी और कब और कार्य करेंगी, इस पे आपको स्वयं विचार करना है। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। यूट्यूब पर एक कमेंट आया है, चंदन सिंह चौहान, आई एम अनेबल टू फाउंड अनिल सर वीडियो, कैन यू प्रोवाइड लिंक। मैं StudyIQ IAS हिंदी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा अनिल सर के साथ, जितने वीडियोस हैं वो StudyIQ IAS चैनल पर हों या फिर इस चैनल पर हों, लेकिन एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा जिसमें सारे वीडियोस को एक जगह कर दूंगा, और मैं प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ताकि आप जितने भी वीडियोस हैं देख पाए। ठीक है। एक सवाल सर यूट्यूब पर और आया है, ये है कि मीडियम इंग्लिश है और हिंदी लिटरेचर, मोनिका लकड़ा हैं, पूछ रहे हैं कि मीडियम इंग्लिश है और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, तो कम्युनिकेशन में किसको तरजीह दें, किस मीडियम को तरजीह दें, किस भाषा को तरजीह? इंग्लिश, क्योंकि हिंदी लिटरेचर तो आप पढ़ ही लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश है और जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट आप इंग्लिश में कर रही हैं और आपने ऑप्शनल जो है हिंदी लिटरेचर लिया है, तो आपको प्रयास इंग्लिश में करना है। ठीक, इंग्लिश में करना है। ठीक है, ये सारे लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एक तरीके से FAQ है। उसका कारण है, कारण ये है कि लिटरेचर को की अभिव्यक्ति तो आप उसकी भाषा में कर लेंगे, सामान्य भाषा में लिटरेचर की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसकी अभिव्यक्ति अलग है। बिल्कुल, लेकिन जनरल स्टडीज की जो भाषा है वो बिल्कुल अलग होगी, इसलिए आपको अंग्रेजी पढ़ना, समझना, बोलना, कम्युनिकेट करना। राहुल RM जो कि नहीं आ पा रहे थे, उन्होंने अपना सवाल भेजा है कि I have lot of ideas to write on answer writing but cannot find space to structure the answer or write on limited spaces. So even I had a lot of ideas when I qualified for the police. Next year I decided which are the priority ideas. So when you write an answer, which I'll explain when I explain answer writing, that you should have a priority, that these are the more important parts of the answer. So I will write that. If there is more space left, I'll write the others. But there are certain important aspects of an answer. They should be written first, and then the other peripheral parts could be brought in if there is space or time available. ठीक है। पटेल देविन अल्पेश भाई, एक ही नाम है ये, पटेल देविन अल्पेश भाई। ठीक है, पटेल साहब अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हाँ, वीडियो कर सकें, वीडियो भी ऑन कीजिए। सवाल पूछिए, माइक तो अनम्यूट हो चुका है इनका। हाँ सर, मेरा 2025 में सर अटेम्प्ट है, मैंने अभी 12th कंप्लीट किया है सर। ओके। और फर्स्ट ईयर से ही मुझे 3 साल में ग्रेजुएशन के साथ
फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे 2025 में सर देना है। पटेल तो भाई, आप ग्रेजुएशन का सही हाँ, आप अपना गोल्डन टाइम प्रश्न से मैं जी गोल्डन टाइम से कैसे मैं सेव कर लूँ, तो किस तरह से प्रिपरेशन 3 साल तक करूँ मैं? आपको फिलहाल सीधे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको इस समय प्रिपरेशन दो प्रकार की करनी है। एक तो सामान्य रूप से अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है। आपकी मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है? सर मैं स्टेट बोर्ड गुजराती मीडियम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में मुझे एग्जाम देनी है। So then you should, first thing that you should do is improve your skills of communication in English. For that, Yes, you have to start thinking, speaking, drinking, sleeping, everything in English, so that your English improves. There is nothing wrong with Gujarati or Hindi. Both are beautiful languages. But since you have decided to give your exam in English, you have to improve your language first. Because no matter what you know, until you are able to express itself effectively, you will not qualify. So you have sufficient time. You have 3 years. Start improving your communication skills in English. For this, I have said it time and again. I repeat it. There is a YouTube video of StudyIQ where I have explained how you can improve your communication and try and follow that practice. That is one. Second, you improve your general awareness. You improve your general knowledge in the next 3 years. Don't start preparing your optionals right now, but you start preparing for general studies. For example, you should start reading issues relating to geography, issues relating to Indian polity. All that is required in general studies. So you should start generally preparing for awareness and improving your communication skills. I'm glad you have taken a decision now. In the next 3 years, you will not directly prepare for the civil service. You are preparing to improve yourself in the next 2 years and then get down to preparing for civil service. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Richa Rai. Richa Rai. RICHA. रिचा, सवाल पूछिए अपना। अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। Very good morning, sir. Good morning, Richa. Good morning, Richa. Sir, am I audible to you? You are audible if you are audible. She has a. अपने mute your device. Mute your device. Sir, I muted. Yes. Now it's fine. Now it's fine. Oh, it's. Sir, my question is कि मैं PG कर रही हूँ. I'm doing device पर YouTube पर रखा है आप. No sir, it's StudyIQ. email से खोला है मैंने. डिवाइस के ऑडियो को म्यूट कीजिए. अब सवाल पूछिए. Sir, can I ask now? हाँ, समझ नहीं पा रही. ये एको आ रहा है, बहुत ज्यादा एको है. जो आप हम लोग जो बोल रहे हैं वही हमें सुनाई पड़ रहा है वापस. अब नहीं आ रहा. म्यूट कर लिया है. कोई बात नहीं, सवाल पूछिए. पूछ कर म्यूट कर लीजिए. ओके सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ ज्योग्राफी से. एंड समटाइम इट बिकम्स वेरी हेक्टिक टू मैनेज एवरीथिंग. सर वहाँ पे भी काफी सारा सिलेबस होता है पीजी का. बट सर ये इसमें थोड़ा सा ये कि ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है साथ में ज्योग्राफी. तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. बट थोड़ा सा क्लासेस 4-5 बजे तक चलती हैं और उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह बहुत कुछ होता है पीजी में. तो थोड़ा सा जो बाकी के जीएस सब्जेक्ट्स हैं उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू गिव माई exam in 2023. Sir, please suggest some. Richa, you mute yourself. Okay. Now, Richa, listen to this carefully. No, please, first of all, mute yourself because it's, yeah, okay. Richa, what you have to do now is, you work out a schedule for the day. How much time do you spend in the school or college? And then create time for yourself. Let me explain this to you. I don't know how do you travel to your class. I don't know how much time do you spend between classes. Because when you say 4 classes every day, I'm surprised because I also did my master's. I don't think there were 4 to 5 classes every day. There were lesser number of classes. But be that as it may, what do you do between classes? Are the classes one after the other? You have to utilize every moment.
Once you do that, you will be able to organize yourself. Unlike those people who are working somewhere, studying is a different phenomena altogether. So in studying, you can find time in between to prepare yourself for the civil service. While you are traveling to the college, how do you spend your time? When you are waiting for your class, how do you spend your time? After the class, how do you come back to home? You know, these are all times which you can utilize for the preparation. While traveling to the school or college, you can discuss with your friends about a subject on civil service. While waiting for another class to happen, you can sit in library and prepare for your civil service. I have prepared along with doing my masters. Many people do along with the masters. They utilize the time in between and the class to prepare themselves. So since geography is going to be one of your optionals in any case, the classes will help you prepare for that optional paper. But you have to utilize other time to prepare for the civil service exam. Many people have done it. You should be also able to do it. नेक्स्ट एक बार राकेश कुमार शॉ को फिर से लीजिएगा, वो बार ट्राई कर रहे हैं। राकेश कुमार शॉ। राकेश, आवाज आ रही है तो अनम्यूट कीजिए और जल्दी से सवाल पूछिए अपना, वीडियो ऑन कर लीजिए। राकेश, आवाज आ रही है? क्या था? चलिए इसके नीचे रोहिणी गोंड है, उनको रोहिणी गोंड नीचे ही है। नेक्स्ट ये राकेश आ गए। चलिए, हाँ चलिए राकेश पूछिए। राकेश अपना प्रश्न पूछिए। आप अनम्यूट कीजिए राकेश, अपने अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। Rakesh, we can't hear you. You have to unmute yourself. No. चलिए पूछिए। We still can't hear him. इंटरनेट स्टेबल नहीं है यहाँ। चलिए ठीक है, रोहिणी को ले लीजिए, रोहिणी गोंड को। राकेश, आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है शायद, तो आपसे बात नहीं हो पा रही है। रोहिणी गोंड को लीजिए। रोहिणी गोंड, you unmute yourself, open your video and ask your question. Rohini, can you hear us? Rohini, are you able to listen to us? रोहिणी ने अनम्यूट किया था अभी ना? She's trying, it seems. Yes, Rohini, you've unmuted yourself. You can open your video and ask your question. Good morning, sir. Good morning, Rohini. Open your video. Okay, go ahead, ask your question, Rohini. Sir, I have a problem. Sir, I can't manage. Sir, I give several time in only one subject. Sir, how can I manage? No, I don't understand your question. Sir, in a single subject, I give lots of time and I can't complete my all the schedule. What is your language? You are going to give your exam in English? Sir, English. So first of all, you have to improve your language for you to understand the subject. If you don't understand the subject, you will take a lot of time. And to understand the subject, you have to understand the language. So my reading of you in the few words that you spoke to me is that your understanding itself will be impacted by your inability to know the language. So please improve your language, because if you don't understand, then it will take a lot of time for you to complete a topic. And understanding is dependent on your understanding of the language. So please go ahead and improve your communication skills for you to learn or understand a subject in shorter duration of time. Sir, I have one question more. Yes. Sir, I am completing, sir. सर मतलब मैं मतलब प्रिपरेशन और कॉलेज दोनों एक साथ कर रही हूँ सर, देन हाउ कैन आई मैनेज? देखिए, पहली चीज तो आप कोई भी मैनेजमेंट के लिए अगर आप अपनी बात ही नहीं कर पाएंगी ठीक से, तो अपना कॉलेज मैनेज कर पाइएगा ना एग्जाम मैनेज कर पाइएगा। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, आपकी जो मैं बात सुन रहा हूँ और मैं एज्यूम कर रहा हूँ यू हैव ऑप्टेड इंग्लिश एज योर लैंग्वेज।
Okay, is my understanding correct? और हिंदी? Yes, sir. हिंदी है आपकी? किस भाषा में आप एग्जाम देंगी? Sir, English. इंग्लिश में दीजिएगा तो फिर इंग्लिश में बातचीत कीजिए ना हमसे आप. You talk to me in English Yes, because sir. if you improve your language, and this applies to everyone who's listening to us just now, if you improve your language, the language of examination, whichever, whether it's Hindi or English, then your understanding will also improve. Without having a good control over language, you will not be able to understand the subject. And your learning process will also improve if you have a good language. So my request to you, Rohini, is that your name? Rohini, that you should try and improve your communication skills. I keep repeating this point time and again, because it's not a question of managing time as much as understanding. The same subject, you can do it much faster if you have better understanding of the language. You will not be able to understand the subject if you don't know the language properly. So please focus on your communication skills. Improve your communication skills. Don't jump into understanding the subject without understanding what is written there. So please spend a lot of time in improving your language. Okay? Okay, sir. कोई इंटरनेट इशू है क्या? बफरिंग बच्चे बता रहे हैं, बफर हो रहा है. चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से. वीडियो इज बफरिंग. ठीक है, ठीक है. मानसी को देखिए, मानसी. MANS नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है सूरज कुमार. ये आपने रिकनेक्ट कर लिया है? सेशन इज टर्निंग ब्लैक आ रहा है इसके जवाब में. किसको कर रहे हैं आप? सूरज कुमार. सूरज. सूरज आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट किया. सूरज सवाल पूछिए अपना. बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है आपकी आवाज. ठीक है, सूरज को छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है. अनुभव मौर्य को देखिए. अनुभव आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट. पूछिए, सवाल पूछिए जल्दी से. Good morning, sir. Good morning, Anubhav. Go ahead, ask your question. Sir, my name is Anubhav and I'm from Bhadoi district, Uttar Pradesh. And I will be giving my third attempt at 2023. So I'm facing a little bit problem in writing answers. In answer writing, I am confused that if you have to design our, like, we write our answer with lot of data and fact supporting our answers. Not Because- necessarily. No, not necessarily. You don't have to necessarily use data. Data has to support an argument, not otherwise. Data, when you use, you are supporting an argument that you are trying to make. So, for example, if you say that India's economy is doing well, then you have to support it with data, clearly indicating what are the data points that establish that Indian economy is improving. You can say that GDP is growing. You can say that per capita income is growing. You can find out that data. So data has to be used not for the purpose of data. It has to support an argument that you are trying to make. And in any case, you give me any example, I'll tell you what sort of a data would be required to support that argument. So don't try and learn the data for the sake of learning data. It has to be associated with a particular argument or point that you're trying to make. Okay? Okay, sir. Sir, I'm also doing my master's in journalism and mass communication. So I have a habit of writing the news report and all that. So I end up writing answers like a news report. So I should take, improve it. No, you have to change it a bit. Normally in writing a news report, you write the headline in the beginning.
Normally you Okay. highlight the headline in the beginning in a news report, whereas in an answer you develop an answer, and in a conclusion you come to a conclusion. In a news report you give the conclusion first and then explain. In an answer, Yes. you have to explain first and then give the conclusion. That's the only difference between news report and an answer. Okay, sir. And ठीक है अनुभव, sir, लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सॉरी okay, sir. अनुभव, Thank you. आपने पर्याप्त सवाल पूछ लिए हैं, एनफ सवाल पूछ लिए हैं. सर लास्ट एक सवाल मैं ले रहा हूं सिर्फ YouTube से. आई एम अटेम्प्टिंग फॉर 2024, शुड आई फोकस ऑन करंट अफेयर्स? अभी से क्या करंट अफेयर्स पर फोकस करें? सी, करंट अफेयर फोकस का मतलब यह है कि आपको करंट अफेयर्स की अवेयरनेस होनी चाहिए. करंट अफेयर्स अनकरंट नहीं बन जाते. इशू जो है, आपकी अगर आदत पड़ जाएगी, इफ यू गेट इनटू द हैबिट of being aware of what is happening around you, then it will help you in preparing for current affairs. So if you are preparing for 2024, you spend some time, as I had suggested in reading editorials, you will get into the habit of understanding and analyzing. Current affairs is not merely facts. It's also your ability to analyze the pros and cons of a particular event that has happened. It's a matter of habit. It's not merely facts. Sometimes people treat current affairs as facts. Then facts, of course, will become old. But if you get into the habit of analyzing what the facts are, then the later facts you will be able to analyze. My friends, I have been time and again telling all of you is that don't get into the final bit right now. Right now, it's the preparation bit. Get into that mental frame. And it takes time to get into that mental frame. People jump into writing answers. I suggest prepare the tools for writing answers. Okay? चलिए, उम्मीद है आप सभी के सवालों का जवाब मिला होगा. मैंने इसे लाइव स्ट्रीम किया था स्टडी IQ IAS हिंदी पर. आप इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि क्या हर हफ्ते आप चाहते हैं कि इसे जारी रखें, इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, और मैं एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा अनिल स्वरूप सर के साथ. जितने भी वीडियोस हैं उसको उस प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा. विकास पूछ रहे हैं सर, हाउ आई कैन गेट अ लिंक टू आस्क द क्वेश्चन. विकास और सबको मैं बता दूं कि ये सेशन हो रहा है स्टडी IQ के जो बैच हैं, फाउंडेशन लाइव बैच हैं, उन बच्चों के साथ सेशंस हो रहे हैं. आप इसमें अपने क्वेश्चंस ऐसे पूछ लीजिएगा, लिख के पूछ लीजिएगा. अगर रेलेवेंट होगा मैं बीच में जरूर सर से पूछूंगा. सर बहुत बहुत शुक्रिया आप एक बार फिर इतना समय देने के लिए, इतने सारे सवालों को एक साथ टैकल करने के लिए. आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया. यूट्यूब के जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगले सेशन में बृहस्पतिवार को होता है ये सेशन, जरूर मुलाकात होगी. और यूट्यूब वाले लोग खास तौर पर कमेंट में बताइए कि आपको क्या चाहिए कि सर से लगातार इस सेशन को यूट्यूब पर रखें, तो फिर हम एक कंटिन्यू प्रोग्राम बना देंगे इसका. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. नमस्कार.